The last psalm in the first division of Psalms. भजन संगीता में फर्स्ट डिवीजन का लास्ट वाला साम है साम 41. Concludes the first book of the Psalter, Psalm 1 to 41, and serves as a fitting closure to a collection that emphasizes individual faith, divine deliverance, and moral integrity of the righteous. And the author and the Psalter is David. It speaks about how God delivered, and it ends by saying how, or as we read this psalm, we can see as an individual how our faith life should be and how it should go. Read Psalm 41 verses 1 to 3 with heading, O Lord, be gracious to me. To the choir master, a psalm of David. Blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble of the Lord, the Lord delivers him. The Lord protects him and keeps him alive. Psalm number 40 is connected with Psalm number 41 in English translation with one word. What is that word? Psalm number 40 का लास्ट वाला वचन पढ़ना, 41 का पहले वचन पढ़ना, एक वर्ड दोनों में भी है. No. Blessed be the Lord, the God. Poor. दाऊद खुद के बारे में कैसे बताया? As for me, I am poor and needy. 41 का 1 में क्या बताया? कनेक्शन तो है. So Psalm 41 ends in it concludes the first section in the first division, that is 1 to 41. Then the Psalm's historical background also reflect in a broader covenantal worldview, maybe during the time of Absalom, maybe Shaul, or any other personal or national crisis. And we are connecting every psalm, connecting with 38, 39, 40 and 41, where David ends in chapter 40, in 40 verse 17 by saying, I am poor and you are my help and my deliverer. And he is saying, in the day of trouble, the Lord delivers him, the Lord protects him and keeps him alive. He is called blessed in the land. So he is speaking about himself, I think some details. मैं गरीब हूँ, वो गरीब के समान हूँ, मुझे संभालने वाला कौन है. उसके बाद काइंड ऑफ ए जनरल इंफॉर्मेशन ही सेइंग, ऐसे वाले लोगों को संभालने वाला कौन है. पहले बताया मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर. एंड इन चैप्टर इन 41 ही सेइंग वो पुअर इंसान को संभालने वाला लोग कौन है. पढ़िए अभी 41 का 2-3 वचन पढ़ के देखिए. Blessed is the one who considers the poor. In the day of trouble, the Lord delivered him. The Lord protect him and keep him alive. He is called blessed in the land. You do not give him up to the will of his enemies. The Lord sustains him on his sick bed. So after giving a sermon in chapter 41, in Psalm 40, here he is giving the application, I think. It sounds like that. 40 में ये किया वो किया धन्यवाद एक करके बोलने के बाद अभी एप्लीकेशन दे रहा है. Whenever we give the application, we generalize the community. जो अच्छा है उनको ये संभाला वो संभाला करके, मतलब खुद के बारे में, instead of saying I got, he is generalizing it in Psalm number 41, divided into 3 parts. Blessings on the compassionate, 1, 2, 3. That is in cross relationship with Matthew chapter 5. Blessed is the one करके लिखा है ना. So Psalm 41, Matthew chapter 5 connected. So in the beginning itself the word is blessed. Then personal lament and confession, 4 to 9. Pray for vindication and praise, 10 to 13.
Pray for vindication and praise 10 to 13. पर अगर ऊंचा किया तो परमेश्वर ही मुझे ऊंचा करना है, वो वाला उसका हिंदी डायरेक्ट क्या है मुझे पता नहीं, किसी ने बताया था? अखंडता नहीं। चैट जीपीटी दत्ता भाई, विंडिकेशन का हिंदी क्या है? नहीं, आप हमेशा देखते हैं ना, इसका अभी आज तक नहीं देखा। हाँ वही है, ये गलत नहीं, ये बंदा गलती नहीं किया करके कोर्ट में से आता है ना, क्या बोलते उसको, निर्णय लेता है, ये बंदा ठीक है, निर्दोष। मतलब पर निर्दोष बनाना कौन बनाता है? परमेश्वर बनाना है करके प्रार्थना। मतलब सबके सामने निर्दोष दोषी है परमेश्वर, आप मुझे निर्दोष बनाना। मतलब केस पूरा होने के बाद आता है ना, ये बंदा गलती नहीं किया था, सबको बता देता है, वो वाला प्रोसेस। प्रेयर फॉर इंडिकेशन ऑफ प्राइज, देन इट आल्सो यूजेस पैरेललिज्म, imagery, inclusive, shift in perspective. Shift in perspective. This is a new one. The psalm moves from general wisdom to personal lament and communal praise. So ये जो भजन संगीता है, शुरुआत होता है जनरलाइजिंग, मतलब सबको ऐसा होगा, धर्मी व्यक्ति को और अच्छा व्यक्ति को ऐसा होगा, सबके लिए। वहां से पर्सनल बातें आता है, वो आता है वर्सेस 4 to 9। 4 to 9 देखना, पर्सनल बात खुद के बारे में बताया। आज फॉर मी लिखे है ना, मेरे लिए तो। देन कम्युनल प्राइज, सबके लिए 10 to 13। सो दिस इज वन मोर आइडिया व्हेन द ऑथर इज मेकिंग और राइटिंग दिस। जनरलाइज करके शुरू किया, खुद के बारे में बोला, उसके बाद बोला सब मिलके हम क्या करना है, धन्यवाद करना है। So what is mean by shift in perspective in Psalms or in a literary device? Or what is mean by the literary device shift in perspective? Generalizing, speaking about oneself, then community. This is an idea for your preaching. For this is the way we are preaching. We speak about context first, generalizing everyone or bringing everyone into one thinking, one thought. Context बताते हैं ना, ऐसा हुआ था, then speaking about oneself. I also gone through this kind of situation. Then saying, now we will go into the Bible and we will take a verse and we will preach. Then he will give the application. Understood? Theological themes: compassion and divine favor. Compassion and divine favor. Suffering, sin and healing. Suffering, sin and healing. Verse 4. Then verse 9. Betrayal and human trickery. Trickery, oh, trick. Okay, हिंदी क्या है? I don't know. ये बहाना बनाते हैं ना, वो वाला टाइप। बहाना भी नहीं, बिट्रायल। वो मुझे मदद करेगा करके सोच में मैं था, वो लास्ट में क्या कर देता है, वो वाला। कुछ इंसान ऐसा है, काइंड ऑफ धोखा। मतलब हमको पूरी तरफ से विश्वास था ये मेरे लिए हाँ बोलेगा, जब बोलने का समय आएगा वो क्या बोलेगा, नो। डिवाइन विंडिकेशन एंड जस्टिस, प्रेज एंड डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी मतलब दूसरों को सिखा रहा है, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग।
Historical and cultural background of Psalm number 41. It has three kind of historical background. First one, in Old Testament, if someone is sick, they have to isolate from everyone. Then they have to come to the community when they restore their old life. पुराना नियम में किसी ने बीमार है तो क्या करते थे, क्या करना करके लिखा था, उनका पूरा समाज से दूर जीना था. उसके बाद जब चंगा मिलता है वापस झुंड में आना था. उदाहरण जो जिसको लेप्रेसी है, कोड़ी, सबसे दूर जाना है, चंगा होने के बाद वापस. पॉइंट नंबर 1, इधर दाऊद भी बताया था 38, 39, 40 में, आई एम लिविंग लाइक एन आइसोलेटेड पर्सन. देन कमिंग बैक टू द कम्युनिटी. पॉइंट नंबर 1. सेकंड, इट हैज कनेक्शन विद प्रोटेक्टिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल. जुबली मनाते थे पुराना नियम में. क्या मनाते थे उस समय, क्या करते थे, जुबली. और हार्वेस्ट का त्योहार का समय पूरा करने के बाद कुछ चीज क्या करके रखना था, बचा के रखना था गरीब लोग के लिए. मतलब इधर पुअर इंसान को कंपैशन करना है, मदद करना करके वचन संहिता में है. सम कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू देयर ओन सोसाइटी, गरीब लोगों का हम क्या करना. देन बिट्रायल मोटिव, ये जो मैंने बताया ये कोर्ट में होते थे ज्यादा, वो पुराने समय में अभी भी मदद करेगा करके उनको लेके आकर साक्षी विटनेस लेके आता है. लास्ट में वो विटनेस क्या करता है, धोखा देता है, वो बोलते ना इन्होंने किया था, खत्म. सो 3 कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है इसका. पहला, फर्स्ट वन, जो बीमार होते हैं तो बाहर निकाल देते थे. सेकंड, तो जो गरीब लोग हैं उनका मदद करना. थर्ड, जो मतलब ही विल मदद करेगा करके लेके आता है. लास्ट में क्या करता है. उदाहरण, कनेक्ट दिस 3 कॉन्टेक्स्ट विद न्यू टेस्टामेंट. पत्रोस. So then when Jesus came, he mostly, you can see the historical evidence, he was with मछुआरा, marginalized, जो गरीब था उन लोगों के साथ ही घुमा था. Then first one, isolation, 40 दिन का उपवास, आइसोलेट हुआ था, नहीं हुआ. Canonical context, you can compare this psalm with Psalm 41 with 72, 89, 106, 150. In which sense means calling others and telling them to worship God. दूसरों को बुलाकर आराधना करो इस परमेश्वर से करके बोलने का तरीका का कॉन्टेक्स्ट में 72, 89, 106, 150 में कनेक्टेड है. समझ आई नहीं है कैसे कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो एंड रीड साम नंबर 50. वहां क्या बोलाता है, क्या कहता है भजन संहिता 150. सारी चीजों धन्यवाद करो करके बताते हैं ना. कनेक्शंस, Psalm 6 and Psalm 38, then Psalm 55, Proverbs chapter 14 and 19, Job chapter 19 is connected together, which means illness, जब बुखार होता है और मुसीबत का समय में इस सारी वचन को हम कनेक्ट करके बता सकता है. when we go through illness or kind of suffering, we can connect Psalm number 41 with all these psalms. Psalm number 41 is connected with John chapter 13 verse 18. Jesus applies it into Judas Iscariot's betrayal. He who shares my bread has lifted up his heel against me. यीशु मसीह भी ऐसा वाला एक संदर्भ के बारे में दोहराता है. So Psalm number 41 is connected with 41 verse 9 is connected with John chapter 13 verse 18.
बहुत वचन पढ़ के देखना, दोनों का साउंडिंग, ट्यूनिंग, मीनिंग सब एक ही है. Then it is connected with Matthew chapter 25, 31 to 46, Luke chapter 6, 20 to 21, which means caring for the poor. गरीब लोगों के लिए हम उनको मदद करना है करके लूकास रे सुसमाचार अध्याय 6 में भी बताया है, मत्ती रे सुसमाचार अध्याय 25 में भी बताया है. In Jewish tradition, Psalm 41 is understood as a reflection of divine justice and human responsibility. For example, यहूदी लोगों का वहाँ परमेश्वर कुछ किया तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका बदले में हम क्या करना है करके समझाने का समय में भजन संगीता 41 को लोग उपयोग करते थे. क्या करना करके भजन संगीता 41 में बताया, गरीब लोगों को कभी धोखा नहीं, बिटरा नहीं. The same thing you can apply it in the Christian tradition, that is connecting with the life of Jesus Christ, caring for the poor, not betraying anyone, then future vindication by his father. Ethical and spiritual मतलब कभी धोखा नहीं देना, do not betray, do not neglect poor. गरीब लोगों को कभी देखकर मैं नहीं देखा करके जाना नहीं, ऐसा वाला कुछ बात है. हमारा हर दिन का चाल चलन के लिए हमको समझाता है. इन आवर डेली लाइफ वी कैन अप्लाई दिस थिंग, केयरिंग फॉर द पुअर, प्रोटेक्टिंग देम, डू नॉट बिट्रे एनीवन. ऑल दिस थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम Psalm number 41. Scholarly ideas we are not going to look. So how you can give, what application you can give for Psalm number 41? After a time of test and self-examination, confession, prayer, cry, lamentation, when we receive something from God, testify it in the midst of your congregation and make them understand. They will also go through this kind of situation. Wait and receive and give thanks to the Lord and testify His goodness in the midst of your congregation or big community. And what application you can give for the first division of Psalm? Wait. भजन संगीता 1 से लेकर 41 तक फर्स्ट डिवीजन है. फुल एप्लीकेशन क्या दे सकता है? पूरा का पूरा भजन संगीता को मिलाकर हाउ कैन वी कंक्लूड दिस फर्स्ट सेक्शन ऑफ Psalms? दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, लिख के रखो. आई विल टेल 2-3, you have to find another 7. I will tell 2 or 3, you have to write your own 7 points. The final application of the first section of Psalms, that is 1 to 41. Think. Final application for the first section, that is 1 to 41. For first division 1 to 41. When I taught you this subject, few things that I have learned, almost all Psalms are connected, and when I read it from the context of the author, I understood everything is related very personally to the author, and from his context, if I read this Psalm, it shows who I am and what all the difficulties that I have in my life, and what all the things, what are the rules and regulations I have to follow. And in that, the first and foremost thing I learned, self-examination is necessary in my life, in my day-to-day life, and that self-examination should accompany Psalm number 17 verse 3. वो खुद परख कर देखने का बात है. भजन संगीता 17 का 3 से जुड़ना है, क्योंकि whenever I do self examination, I am a human being, I have a tendency
I have a tendency, I may see myself as good. That is not the final conclusion about myself. I have to add something into that self-examination. 17 के 3 में क्या लिखा? The Lord, you have tried my heart. You have visited me. You have tested me. And in that, Lord, if you see me as righteous, that is okay. If not, tell me where I am wrong, and restore me to your relationship. So this will be the application that I will give if you ask for the first division. समझ आया? Questions for exam.